I used to say it has three components: democracy, diversity, and development of the last person. But the more I think about it, I now use a somewhat different expression: India's Swadharma, which is not quite a translation, and it does make some of my friends slightly uneasy. But the more I think about it, the more I'm convinced that that is the line of which we should think. India has a Swadharma, and the word dharma, I need not say, has nothing to do with what we call religions. And that Swadharma has three elements which have come from our civilizational heritage. This is the idea of karuna, the idea of maitri, and the idea of shila. These three ideas that came through our civilizational heritage were exposed to modernity, came through various rulers, came through various kinds of theories, were exposed to modern times, and were given a new expression. And that expression, that institutional transformation of these three ideas, is what we call different isms. Today, I like to believe that what we call socialism is actually a modern transformed version of karuna. Its foundational virtue is karuna. What we call secularism, somewhat mistakenly, because we've unnecessarily taken the load of European problems. उनकी बीमारी का इलाज करने हम बैठ गए, हमारी बीमारी है ही. What we call secularism is actually direct descendant of what was called Maitri. That was Ashok's principle, that was Akbar's principle. Our problem and our solution is in line with what Ashoka practiced, what Akbar practiced. It has actually very little to do with the church-state problem of Europe that they handled and they did something about. And what we call democracy today is, in the last instance, a way of carrying forward the idea of shield. Shield can have many expressions, so it's not the only shield, but one of the ways of expressing shield in public life, one expression of that. We can have dasa shields, we can have pancha shields, but one of those shields is what we today call democracy. भारत का जो स्वधर्म है, जिसका हिंदू मुसलमान मजहबों से कोई ताल्लुक नहीं है, बौद्ध जैन, केवल आज हमने बनाया है ऐसी बात नहीं. ये स्वधर्म हमारे संविधान में लिखा है, लेकिन केवल संविधान में लिखा है ऐसी बात नहीं. संविधान एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, कई देशों में अच्छा होता है, कई खराब होता है. संविधान में कई बातें लिखी हैं, कुछ बहुत प्योर और सीक्रेट है, कई बहुत डिटेल्स है और ऑलमोस्ट अननेसेसरी डिटेल्स. मगर हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन की ओर भारत के स्वधर्म को परिभाषित किया गया. लेकिन महत्वपूर्ण बात केवल ये नहीं है कि संविधान है. Constitutional status by itself does not make it sacred. What makes our constitution sacred is that it is a product of, it is the distilled version of the wisdom of 150 years of our national movement. इस देश की आजादी का राष्ट्रीय आंदोलन था, उसकी 150 साल की जो पूरी विरासत सोच थी उससे पहले की, उस सोच का कपड़ा छान निचोड़ है हमारा संविधान. और राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण केवल इसलिए नहीं है कि राष्ट्रीय आंदोलन है,
बल्कि वो राष्ट्रीय आंदोलन स्वयं इस देश की 5000 साल की विरासत को नए संदर्भ में परिभाषित करने का प्रयास है। So, the idea of India is inscribed in the Constitution of India, which is sacred not only because it's a constitution, but because it is the distilled wisdom of 100 years of encounter of our national movement. And that national movement's wisdom itself is critical because it is a distilled understanding of 5,000 years of our civilization. That is what makes this idea of India so sacred. और जैसा मैंने कहा, ये आइडिया ऑफ इंडिया, भारत का स्वधर्म जिसे मैं कहता हूं, इसके 3 पाए, 3 स्तंभ, करुणा, मैत्री, शील, जिसको हम आज अलग अर्थ में परिभाषित करते हैं। मैं आज इसकी लंबी व्याख्या नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आज जिस धरती पे खड़ा हूं और जिस समय पे खड़ा हूं उसके बारे में बोलना चाहता हूं। भारत के स्वधर्म को देश काल के संदर्भ में परिभाषित करना आज की जरूरत। हम आज 2023 के कर्नाटका में खड़े हैं, जहां अब से 1-1.5 महीने बाद कोई चुनाव होने वाला है। और मेरे लिए सहयोग नहीं है, इससे मैं आयोजकों को बधाई देना चाहता हूं। आपने सही जगह पे सही वक्त पे इस चर्चा को आयोजित किया, क्योंकि भारत के स्वधर्म की रक्षा का अभियान यहां कर्नाटका से शुरू होगा। कर्नाटका वो धरती बनी दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए सबसे पहले दरवाजा अगर कोई खुला तो कर्नाटका में। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, दक्षिण से शुरू होकर बीजेपी की वापसी का अगर दरवाजा बंद होना शुरू होता है तो कर्नाटका 6 महीना पहले जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो मैंने कहा ये बहुत सुंदर घड़ी है, ये दक्षिणायन की घड़ी है भारत, क्योंकि बहुत समय हो गया दिल्ली में बैठे लोग मेरे जैसे अपने आप को इस देश का मालिक समझते हैं और सोचते हैं कि जो हिंदी नहीं बोल सकता वो इस देश में किराएदार है। This has happened for far too long. That people who speak one of the youngest languages of this country, Hindi is actually one of the youngest languages of this country, they have somehow convinced themselves that they are the owner proprietor of this country called India, and they need to teach everyone how to be national. I think it's a beautiful moment that a walk started from Kanyakumari and brought the influences from Dakshina to the north, which is what the country needs to do. And I say that not because I happen to stand in the south today, but because I deeply believe that some of the values that were developed have been cherished and continue to live here need to be carried northwards. I could speak of Tamil Nadu, I could speak of Kerala, I could speak of Andhra Pradesh, Telangana, but today I want to speak of Karnataka. This is the land of Basamana. This is the land of Vachana Parampara. The Vachanakas have taught not just people of Karnataka, they have lessons for this whole country. And many times I say to my friends, in order to talk about socialism, in order to talk about feminism, why do you need to go anywhere else? Just go to Karnataka of the 10th and 11th century and you get all the answers.
ये बसवण्णा की भूमि है, ये वचन परंपरा की भूमि है, ये कुवेंपु की धरती है। इस देश की सबसे सुंदर साहित्य की भूमि। जब मैं अपने हिंदी वाले दोस्तों को पूछता हूं कि अच्छा हिंदी में कितने ज्ञानपीठ अवार्ड मिले और कन्नड़ में कितने ज्ञानपीठ अवार्ड मिले, तो उन्हें शायद उत्तर पता नहीं होता। लेकिन हम जैसे लोग जो कि अनुवाद में ही सही अनंत मूर्ति को पढ़ के बड़े हुए हैं, जो कुवेंपु की कविताएं पढ़ी है जिन्होंने, उन्हें पता है कि इस धरती में कितना ज्ञान, कितनी ऊर्जा, कितना कुछ बताने को। कुवेंपु का वो जो गीत जिसे कर्नाटका का राज्य गीत बना दिया गया है, कितने खूबसूरती से वो कर्नाटका और भारत को जोड़ता है। कर्नाटका मेरी मां की जय हो, जो भारत मां की बेटी। वो ये जो कर्नाटका की विचार परंपरा, ये विचार परंपरा केवल उन लोगों की बपौती नहीं है जिनकी मातृभाषा कन्नड़ है, वो मेरी भी मां है। चलिए मां नहीं तो मौसी तो है। ये हम सबकी परंपरा है। कर्नाटका से मेरा परिचय 30-40 साल पहले हुआ। किशन पटनायक, मेरे बेचारी गुरुयान, चेंगल भाई भी बैठे हुए हैं, तमाम सब लोग जिन्होंने किशन जी से सीखा था, संदीप भाई है। आप पहली बार कर्नाटका लेके आए। कर्नाटका में पहली बार मैंने किसान आंदोलन की ताकत को देखा, प्रोफेसर योगेंद्र साहब। और मैं बिना झिझक के कह सकता हूं कि आज इस देश के किसान आंदोलन को जिन तमाम नए विचारों की जरूरत है, वो सब बात प्रोफेसर रंजन स्वामी ने 1980 के दशक में कही। आज हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, आज हम एनवायरमेंट की बात करते हैं, आज हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर सस्टेनेबल होनी चाहिए। आजकल तो प्रधानमंत्री भी ऑर्गेनिक खेती की बात कर देते हैं। कोई किसान आंदोलन ये बात नहीं करता, सिर्फ कर्नाटका राज्य रंजन संघ ने इन विचारों को आगे। कर्नाटका ने पूरे देश को रोशनी दी। ये कर्नाटका गोपाल गौड़ा की धरती है, किसानों के आंदोलनों इससे हमने सीखा। जब मैं कर्नाटका के बारे में सोचता हूँ, मैं डी आर नागराज के बारे में सोचता हूँ, मेरे मित्र, बड़े भाई, जिन्होंने मेरी आंखें कर्नाटका के दलित आंदोलन के बारे में और कर्नाटका के दलित आंदोलन की जो अनूठी परंपरा, मुझे याद है मैंने नागराज से पूछा कि कर्नाटका का दलित लिटरेचर क्या है। मैंने मराठी दलित लिटरेचर के बारे में तो सुना है। तो डी आर नागराज ने हंस के कहा था, हाँ हाँ वो भी है, वो दलित ज्यादा है, लिटरेचर कम है। हमारा लिटरेचर ज्यादा है, दलित कम है। तो मेरी आंखें खुली तो मैंने पढ़ना शुरू किया। कर्नाटका, मैं कहता हूं देश का शायद एक ही जगह है जहां दलित आंदोलन के नेता और किसान आंदोलन के नेता एक मंच पे बैठते हैं। और आज नहीं, आज से 30 साल से बैठे पूरे देश में मिलना संभव है। जब उस कर्नाटका का नाम मैं सुनता हूं कि यहाँ हिजाब पे दिक्कत है, यहाँ आजान पे दिक्कत है, यहाँ लिंचिंग हो रही, यहाँ लोगों को कहा जा रहा है कि वैलेंटाइन डे नहीं मना सकते, तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं तो पहचानता नहीं इसे। I don't recognize this state that's being talked about. This is not the Karnataka that I know.
This is not the Karnataka that I have learned about. This is not the Karnataka I have learned from. And today, it is for that Karnataka to stand up and to say, this is not what you can do with this land. This land has just too much humanity, has just too much depth, has just too much intellectual content, has just too much political energy, has just too much ethical courage to allow itself to be governed by a bunch of gurus, which is what is happening. आज एक बड़े बदलाव की शुरुआत की जरूरत है और वो शुरुआत कर्नाटका से हुई। आज हम एक अभूतपूर्व मोड़ पे खड़े हैं। This is not an ordinary election. I know election is not the subject here. But election is the background, and allow me to bring the background to the foreground. This is not an ordinary election. 1977 was not an ordinary election. 1977 was not about deciding who would occupy position of power in Delhi for a few years or few months. 1977 was about whether India will remain democratic or not. Today, this election in Karnataka and the 24 elections subsequently in India is not merely about who would get to govern Karnataka, who would make a few more rupees than others would. These are the routine things that happen in politics. This election is really about deciding the fate of this country. Because what is happening is a systematic dismantling of our republic. If 1977 was a challenge to our democracy, today we face a challenge to our republic, which is deeper than the challenge to our democracy. Democracy is one of the elements of our republic. A republic is a political community which has shared values and acceptable structure of institutions. Today, that very community is under threat. आज खतरा सिर्फ लोकतंत्र का नहीं, आज खतरा हमारे गणतंत्र को, उस गणतंत्र का जो गण है उसको तोड़ा जा रहा है। इस देश की बुनियाद पे हमला किया जा रहा है। आज हम यहाँ गांधी भवन में खड़े होकर बात कर रहा हूँ मैं, हम सब बैठ के सुन रहे हैं। Would we be able to hold a similar meeting 5 years down the line? We don't know. Will we have the same constitution as we have today 5 years from now? We don't know. This is what is at stake. At stake is not just a new government. At stake is not kaun banega pradhanmantri. At stake is the constitution of this country. At stake is the legacy of the freedom movement of this country. At stake is the civilization and heritage of this country. That is what is at stake. That is what 2024 will decide. And allow me to say that Karnataka election of 2023 will set the tone for election of 2024. इसलिए आज पूरे देश की निगाह कर्नाटका है। आज पूरा देश देखना चाहता है कि क्या वचन परंपरा का एक प्रदेश अपने आप को, देखिए सच बात यह है कर्नाटका में आज तक बीजेपी को कभी मेजॉरिटी नहीं मिली, इलेक्शन में नहीं मिली, बात की चीजों से मिली। तो देश देखना चाहता है कि क्या ये कर्नाटका अपने आप को इस दाग से मुक्त कर सकेगा। क्योंकि कर्नाटका में मुक्ति शुरू होगी तो जैसे मैंने कहा पूरी देश की मुक्ति के द्वार खुले। दक्षिणायन ये जो यहाँ का दक्षिणायन आगे चलेगा जरूर होगा सर।
हिंदी में एक गीत है, चालू है लेकिन चलेगा। वो कहते हैं तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा दो। अब आप कर्नाटक वालों ने दर्द भी दिया है, बाकी दक्षिण को तो अब तुम्ही दवा दे, दवा भी आपको शुरू कर रही है। And Karnataka does not need to import its medicine from anywhere. The medicine is very much here. All we need to do is to look within. All we need to do is to draw on our intellectual and cultural and political strength. All we need to do is to stand up and say, no more. Enough is enough. You cannot treat this land like this. Go somewhere else and make your 40%. There is Mauritius, there are all kinds of places in the world to make your 40%. Don't do it. I'm very confident that I've always said that India is not made or unmade in Delhi. India is made and unmade in the lakhs of villages. Please remember, India's unity is not like the unity of Europe. European unity is about, German unity is about erasing all other possible differences within Germany and creating one single Germany. This is the French unity. India's unity is Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravid. This is our unity. No other country has a center which has this kind of multiplicity built into this. This is our unity. So, if our unity is this is how this unity shall be defended. All I can wish is that Karnataka shall become the Kurukshetra for defending the dharma that is